government will take care. But India, there is absolutely nothing, zero social security in India. So, but also healthcare also, na? So वो भी खर्चे हैं. हाँ, और healthcare cost is increasing day by day with the new all the technology. So absolutely, that's yeah. So you are settled in. Was 10:31? Shall we start? Yeah. Okay. So you can start with the introduction, Mr. Shekhar. You can start. Yeah. You can start, boss. Okay. So friends, good morning. We have Mr. Anil Srivatsa with us. He is pioneer in many ways. He has 30 years of experience in radio and digital media. As a CEO of Radio Technology Broadcasting, he launched India's first talk show format FM radio station network, OFN7. He is a regular TEDx speaker, co-founder of RadioWala.in, and is the CEO of Sochcast Media. Anil's accelerated career spans a vast gamut of experiences, from being the CEO of Kings 11 Punjab, great for all our cricket lovers, to being the CEO of the Radio Today Broadcasting. Previously, he was the editor and publisher of Blossom City, Bangalore, and executive vice president at ImaginAsian TV, USA, a limca book record holder, the radio person of the year, and he is a world record holder at the World Transplant Games, where he won gold for Team India in 2019. So we all are very fortunate to have Mr. Srivatsa with us. He is going to talk about the organ donation awareness program, what campaign he has taken, and is spreading this awareness to everybody. Because we all know after you die, your body is just either buried or burnt. So let us hear to him, and I will hand over to Mr. Vatsa for his talk. Thank you. Yeah. Shukriya. And Hindi English will work, or except English or Hindi? Both are okay. Both you can speak in both languages. There's no issue. Okay, great. Yeah. So anyway, Pradeep ji, thank you very much, and Shekhar ji, thank you for bringing me back to your life again. Clearly, you haven't had enough of me, and I guess that must have added some values. तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम अभी यहाँ पे हैं. अभी मेरे लिए यहाँ रात के 12 बजे हैं और आपके संडे का दिन चल रहा है. अब organ donation जो मेरा मुद्दा है, it's not a very welcome subject for a lot of people in India. वो जो हमारे कल्चर में जो है organ donation का मतलब मौत के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते. तो ये बात छेड़ना भी काफी मुश्किल पड़ता है. But at the same time, it's the easiest way to save a life. So since you're a senior citizen group, so इसका I assume कि आप लोग सब मेरे से बड़े हो. I'm 54, तो मैं slowly बढ़ता आ रहा हूँ आपकी तरफ भी. We are mixed. We are youngsters as well as senior citizen both. Yeah. Right. So now I'm going to start this session in a little different manner, so that Shekhar ji doesn't feel that I'm repeating myself for him, because वो जब एक बार सुन लेते हैं ना, फिर ऐसे लगता है कि अरे यार ये वही बोल रहा है. तो मैं एक अलग तरीके से इसी मुद्दे को I'll approach it. Now, I'm assuming that all of you know what organ donation is. If you don't, then please raise your hand. Then I'll get into that a little bit. Please explain. We know organ donation is about giving your organ to another human being. Okay, that's the plain and simple thing. To combat an illness that is killing that other person. Simply put, that's what organ donation is. आजकल गणपति पापा मौर्य चल रहा है. तो हमारे हिंदू धर्म में हमको पता है कि the first recipient of an organ of a different living being was Ganpati ji. And we have wholeheartedly accepted the concept of it. तो धार्मिक रूप से we have no issues from the Hindu side that organ donation is a good or bad thing. It is an accepted thing. Good or bad is a result of individual consequences based on success of an operation or not. But conceptually, we're okay with this. And having said that, in my research,
There is no religion that forbids that. कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जो इसको मना करते हैं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। धर्म के अधिकारी जो पालन करते हैं वो धर्म को, जो ठेकेदार है धर्म के, sometimes they are in conflict of organ donation. वो अपने भक्तों को सिखाते हैं कि नहीं, ये करना नहीं चाहिए। तो अब ये सब विश्वास की बात है। हम we've been talking about in search of truth. Some of us सच की खोज में हम अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर देते हैं। सच क्या है? What is the truth? गौतम बुद्ध भी वही ढूंढने निकल पड़े थे। What I'm going to say today is giving you a perspective. मैं ये नहीं कहने आया कि आपको अंगदान करना ही है। You should. I'm not coming here to tell you not to be an organ donor. I'm not coming to tell you that you should be one. I'm just coming to give you a different perspective of how to look at this as it relates to your own life. तो मैं ये कहता हूं कि एक चीज जो है, we have no control on. The good news is हम सब मरने वाले हैं। So ये जो हमारी ये जिंदगी है, इससे हमें मुक्ति मिलना ही है, ये गुड न्यूज है। बट बैड न्यूज इसी में छिपा हुआ है, और ये है कि हमें पता नहीं कि हम कब मरने वाले हैं, कौन कब जाएगा। और जब हम अभी मरने की इतनी बात कर रहे हैं, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मानसिक तौर से यू आर फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल विद दैट थॉट। एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है उस थॉट को लेकर, क्योंकि बचपन से लेके हमें मौत से डरना सिखाया है, और उससे भी ज्यादा डर हमें अगले जिंदगी का है, अगले जन्म का है। इन दोनों चीजों से हम डर डर के जी रहे हैं कि गब्बर सिंह का जो डायलॉग है वो एक्चुअली सही है, जो डर गया समझो कि वो मर गया। तो रोज हम मर मर के जीते हैं इसी डर को लेकर। और ये जरूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज एवरी सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी है। हमें कभी कभार ये भी कहता हूं कि ये जो स्वर्ग प्राप्त करने का हमें जो वो इच्छा है कि हम we try and strive for that cosmic space of heaven. मैं मानता हूं कि अगर हम वो हेवन तक पहुंच गए और उस दरवाजे के पास आ भी गए, और उस दरवाजे का जो रखवाले होंगे वो आपसे एक सवाल करेगा, उस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कि नहीं? और ये सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन यू मे बी आस्क्ड, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज कंजेंक्चर। हेवन है या नहीं है किसी को पता नहीं, एक विश्वास है, और अगर आप उसको मान लिया तो वही ट्रूथ हो गया। अगर उस विश्वास को आप बदल लोगे, वो अपना सच चेंज हो जाता है। सो ट्रूथ इज ऑलवेज नेगोशिएबल। और ये जो ठेकेदार हमसे पूछेगा, स्वागत है आपका, एंड द वन क्वेश्चन ही विल आस्क यू, स्वर्ग कैसा था, आपको अच्छा लगा? इसका तात्पर्य आप समझे? Have you understood what I just asked you? How was heaven? Maybe the life we're living now is heaven. क्या हम इस जिंदगी पर इनफ फोकस डाल रहे हैं ताकि हम इस जिंदगी को हेवन बना सके? क्योंकि हेवन यहां है, हेल भी यहां है। So can we make our life here count? Can we make it useful? Not just to ourselves, but in the service of your fellow mankind. Can we do it? Yeah, you can do it. जीवनदाता है कौन? We are always looking at our parents as life givers on this planet. हाँ, सही है. They're right. But every one of us, once we are born, हम जीवनदाता बन सकते हैं। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि सबसे महादान होगा जीवनदान। इसलिए मां को एक अलग दर्जे में बिठा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दी। यही दर्जा हम भी स्वीकार कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बिकॉज ये प्योरली वॉलंटियरिज्म है।
और दूसरी बात यह है, it is driven by a divine power. What is that divine power? प्यार, love. Love is a divine power that हर किसी को नसीब नहीं होता है. हर कोई इसे निभा सकता है, पर हर किसी को ये नसीब नहीं होता है. जैसे कहते हैं, old age is also a privilege of a very few people. उस उम्र तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है. आज के जमाने में हर चीज से इतने डेंजर्स हैं कि हम जल्दी भी मर सकते हैं और ओल्ड एज तक पहुंच भी नहीं पाए. तो जो आप पहुंच गए ना, वो एक प्रिविलेज है, और उस प्रिविलेज का हम करें क्या? सो अब चलिए इसको बेस में रख के हम कहें कि ऑर्गन डोनेशन से इससे क्या रिश्ता, क्या लेना देना है. तो फिर से हम अपने रीति रिवाज तक जाते हैं. I'm going to mainly speak about post-life organ donation, because जो living organ donation जो है, it's only people who are 65 or 70 and younger are able to give their kidneys and livers while they're alive. उसके बाद डॉक्टर्स लेंगे भी नहीं. बट मरने के उपरांत कोई भी किसी भी उम्र से दे सकते हैं. तो we'll talk about that. So when you die, the things that you can give up. आंखें. We have two eyes, जिसमें दो corneal layers, दो cornea है. Both eyes have a cornea, and those corneas have 3 layers each. Which means अगर एक layer हम एक नेत्रहीन शख्स को दें, तो हम 6 लोगों की आंखों में रोशनी ला सकते हैं. हम अपने आंखों के जरिए. Then the heart में जो ventricles है, ये जो veins and arteries in the heart, that can be given to somebody. Your inner eardrum can be given to somebody. Your small intestine can be given to somebody. Your bones can be given to somebody. Your kneecaps can be given to somebody. Your skin can be given to somebody. तो पहला डर ये होगा, और मैं ये डर शब्द इसलिए यूज करता हूं क्योंकि किसी का इसमें ना शामिल होने का एक ही वजह है, डर. डर, what creates fear? Fear is created by an unknown. जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है. इसलिए स्वर्ग से हम कभी डरते हैं, नर्क से डरते हैं. अननोन है ये. और किसी ने आपके दिमाग में ये विश्वास डाल दिया है, और जब विश्वास हो जाता है तो ये हम सच मान के चले जाते हैं, और इस डर के साथ हम जीने लगते हैं. यू सी द विशियस साइकिल. इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं. The inner eardrums can be yes, I'm just responding to a question in the chat. So when you have so much fear, the only way to get rid of fear is information. जितनी जानकारी एक चीज के बारे में पाओ, उससे हम कम डरने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू, आप एक सुनसान गली में एक रात, अंधेरी रात में आप एक सुनसान गली में जाए, इफ आई आस्क यू टू गो थ्रू अ वेरी डार्क एली, यू वॉन्ट, बिकॉज आप डरते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं उस अंधेरे में क्या है. चोर होगा, जानवर होंगे, भूत होगा. These are all the unknowns we're afraid of, right? पर उसी गली पे हम एक बड़ा सा फ्लड लाइट लगाएं और फिर आपको कहें अब जाइए उस गली में, अब जाओगे, आप तो सीना तान के जाओगे. क्यों? बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि उस गली में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. तो ये जो फ्लड लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन है अंगदान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम इस डार्क गली में घूम रहे हैं, या हम जा ही नहीं पा रहे, या जाने से हम मना कर रहे हैं क्योंकि इससे डरते हैं. और ये डर क्या चीज पैदा करता है? अंधविश्वास. धर्म नहीं, not religion. Superstitions create this fear. And the superstition also becomes a dignified way of endorsing this fear. So इस superstition के पीछे
हम खड़े होकर, हम इसके सहारे से, इसके आड़ में रहकर हम ना बोलने के लिए सामने आ जाते हैं। इस जन्म में हम आंखें दे देंगे तो अगले जन्म में हम अंधा पैदा हो जाएंगे। Then you take it to a very more spiritual level ki if we give up one of our organs and then we burn our body, then the soul is restless. So I have a different perspective of this. मैं इस चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं. I'm just questioning it. I'm making you also question it. You may come back with the same answer that you believe, or you may not. तो जिंदगी और किसी के जिंदगी और आपके मौत में फासला ये होगा कि आपकी सोच कैसी हो जाएगी. तो आपकी सोच को मैं जरा चैलेंज कर रहा हूं. If I have to take the examples of these two superstitions that prevent people from, one of the reasons that prevent them from doing this, अगर हमने इस जिंदगी में आंखें दे दी और अगले जिंदगी में हम पैदा होंगे अंधे, अगर ये लॉजिक सही है, चलो मान के चलें ये सही है, let's assume this is correct, then if I actually donate my heart in this life or my lungs, फिर जाहिर है कि in the next life I'm going to be born without lungs or a heart. ये पॉसिबल है? हम जीते जी ही मर जाएंगे इसके बिना. जिंदगी ही नहीं है हार्ट बिना. तो अगर if the logic fails here, it should also fail with the eyes. उल्टा मैं कहता हूं कि इस जन्म में भगवान ने ऐसा हमको बना के दिया है, अगले जन्म में फिर से नया बनवा के ही भेजेगा. तो उस चीज से ना डरें. और एक और बात कहूं इसी को लेकर, अगर सोल में बॉडी का कनेक्शन है, बिकॉज अब हमारे घर में भी संस्कार यही दिए हैं हमको कि सोल डिटैच हो जाता है बॉडी से और बॉडी एक पैकेट है और रैपिंग है और उस रैपिंग को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. बिकॉज सोल इज एन एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता. तो सोल कहीं घूमने चले जाता है. ओके, यहां तक तो मैं समझा. बट इफ यू आर सेइंग द सोल इज कनेक्टेड टू द बॉडी, फिर इस बॉडी को जब आप जलाओगे, इससे ज्यादा ट्रॉमा किस चीज का है? The trauma of burning your body is far greater than removing my eye. यहां तो सब कुछ जल गए. तो then the atma should be bhatkoing in that logic. So either the atma is detached from the body or is attached. अब दोनों नहीं हो सकते. And that's what I question. I'm okay to believe one or the other. पर जब दोनों कहा जाता है साथ में, फिर मुझे दिक्कत होती है इस बात पर. So there's another reason that people used to say no. अब एक और रीजन है, और when I say people मैं क्यों बोल रहा हूं, इतना इंसाइट मुझे है इस बात को लेकर, क्योंकि मेरा जो ये मुहिम है, जो मुकाम है, why I do this is because I have a मकसद of reaching 1 million people. 10 लाख लोगों तक मैं अपनी इस सोच को पहुंचाना चाहता हूं, जहां पर किसी को प्रोत्साहित करूं कि वो अंगदान करे और अंगदाता बने और जिंदगियां बचाए. अब तक मैं 1,27,000 लोगों से बात कर चुका हूं ऐसे फेस टू फेस, और आप लोग भी इसमें अभी जुड़ गए हैं. तो ऐसा कोई सवाल है नहीं जो मैंने अभी तक सुना नहीं. अब कुछ नया चीज मैं सुनने को नसीब नहीं करता हूं. जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो वही चलते रहते हैं. तो ये FAQ मैंने बनाया है ताकि उस FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस करूं. So this fear of the next life is the number one fear among senior citizens, to prevent them from coming to donate their organs. So I'll give you a perspective. And the fear is what? Ki I want to come back intact. I want to come back and punarjanam lena hai to mujhe, I want to come back as a human being. Reincarnation. So let me address these two in the way that I understand it.
अब reincarnation is not in our control, वो हमारा गारंटी नहीं है। हम मरेंगे और किस चीज बन के आएंगे ये भाई किस्मत की बात है। But the objective is to come back as a human being because we are the most superior form, जो हमारे दिमाग में हम समझते हैं, we are the most superior form of a living thing and we want to come back as a human. मकसद यही है कि हम पुनर्जन्म ले तो मनुष्य बन के ही आए। मेरे हिसाब से जैसे मैं इसको समझता हूं इस इक्वेशन को, कि अगर मैंने इस जिंदगी में, इस जन्म में मैंने अपने अंग को दान कर दी तो मैं गारंटीड मनुष्य बन के आऊंगा वापस, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट नाउ। मेरा दिल किसी को दिया मैंने, फेफड़े किसी को दिए, गुर्दे किसी को दिए, आंखें किसी को दे दी। नाउ व्हेन आई एम गिविंग अ पीस ऑफ माय, अब समझो ये है आपका सोल, ये पूरा एनर्जी बॉल यहां घूम रहा है, फुल ऑफ एनर्जी, जैसा कॉस्मोस भी है। द कॉस्मोस इज ऑल्सो पार्ट प्लैनेट्स, पार्ट स्टार्स, पार्ट एंड्रॉइड्स, पार्ट गैसेस, और इस सब को मिला के एक यूनिवर्स बनता है, वो है हमारा सोल। So if I give up my body through which some part of my energy, my part of my aura, energy and aura are quite similar, right? अगर इस ऊर्जा को मैं भाग बना के, प्लैनेट्स बना के किसी के अंदर में दे दूं, तो मैं इतनों के अंदर जी रहा हूं, एक स्कैटर्ड एनर्जी बनकर, मनुष्य के रूप में ही। अरे ये भी एक विश्वास है, इसको आप गलत भी नहीं कह सकते हो। अगर ये गलत है तो वो भी गलत हो सकता है, बट देखने का एक दृष्टिकोण है। मैंने कहा ना, ट्रूथ इज नेगोशिएबल। जिस चीज को आप बिलीव करने लगते हो, जिस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं, उसी को सच मान के हम जाते हैं। और कल को कुछ और इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन फ्लड लाइट, तो शायद ये बिलीफ सिस्टम्स को भी हम चैलेंज कर पाएंगे, और इसी को इवॉल्व होना कहते हैं, एनलाइटेंड होना कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, मोक्ष। और वो आता कैसा है? अपनी सोच को बदल के, एक्सपोजर को बदल के। So organ donation is just a result of all of this. It's an outcome that you want to do something for yourself. आप समझे कि चलो मेरे जिंदगी में मैं इतना काम कर गया हूं, मैं अपना एक स्टैचू बनाना चाहता हूं, I want to leave something, I want to leave a legacy behind. ये अपना ईगो कह रहा है, अहंकार कहता है। पर्सपेक्टिव यह है कि अहंकार भी अच्छी चीज है अगर किसी का भला होता है। I would love to leave my legacy by giving life to some people who otherwise are going to die, and have them live on and me live through their ambitions, through their journeys from now on. Because as energy, I'm going to be agnostic. मैं नास्तिक हूं। Energy is नास्तिक। आज मैं इस बॉटल में हूं, कल को मैं उस लाइट बल्ब में हूं, इस फोन में हूं, हर चीज में एनर्जी है ना। ये प्रूवन साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे हम ही एनर्जी हैं। और जब शव को हम ठिकाने लगाने जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? हमारे पूर्वज ने एक सिस्टम बनाया है धर्म की आड़ में। बिकॉज अगर इफ आर बॉडीज जस्ट लाइक जानवर के जो है, जो ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, बिकॉज जानवर के बॉडीज को खाने और खत्म करने एक इकोसिस्टम बना हुआ है। वल्चर्स आते हैं या स्कैवेंजिंग एनिमल्स आते हैं, उसको खाली करके क्लीन करके निकल जाते हैं। पर हम ह्यूमन बीइंग्स इतने तादाद में हैं कि वी हैव टू डिस्पोज आवर बॉडी ऑफ, सो दैट वी डोंट क्रिएट बीमारियां, फैलाए नहीं हम। पर इसको मेंटेन करने के लिए या कानून बनाओ या इसको धर्म की आड़ में ओढ़ के कंप्लायंस,
So every religion has a different way of disposing of their bodies. हमारे पारसी लोग क्या कहते हैं, वो टावर ऑफ साइलेंस में डाल देते हैं. क्यों डालते हैं वहां पर? They feel that they want to be useful in death. I saw a question out there which I would love to answer about truth and negotiable. I have a perspective. Maybe you believe, maybe you don't. They want to be useful in death. इसलिए वो ऊपर डाल के वो चील कौवों को खिला देते हैं ताकि उनके मौत में भी किसी का काम आए. अरे भाई, very good, perfect, beautiful thought. Now, if you would like to give your organs away to a fellow human being, वो भी तो यूनिवर्स ही है. वो चील कौवों से कम है क्या? वो भी नीडी हैं, वो भी जरूरतमंद लोग हैं. You are still going to be useful in death. So give away your organs to some people who will live, and the rest जो नहीं काम आता है वो चील कौवों को खिला दो. हम अपना शव हिंदुओं में क्यों जलाते हैं? There are many reasons. Basic thing is disposal of the body. That's the main objective. And then ये जो ashes हैं उसको हम हवे में या पानी में बिखेर देते हैं ताकि जहां से हम आए थे वहीं जाना है. थियरी यही है. क्रिश्चियंस में भी यही है, जूस में भी यही है. Ashes to ashes, dust to dust. थियरी यही है. जहां से हम आए यूनिवर्स से, यूनिवर्स में ही जाएं. तो मैं क्वेश्चन, I ask you this one challenging question. Are we not part of this universe? So in my death, instead of burning it and putting my ashes into the river, can I not give a viable organ to another human being who is still part of this universe? जैसे पेड़, जैसे हवा, जैसे नदी. जिस दिन से हम अपने आप को इस यूनिवर्स का एक हिस्सा मानने लगेंगे ना, we will see ourselves as people that are in need of our own humanity. इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत. So organ donation is another way of leaving a legacy. अगर अहंकार से जीना है और अहंकार के साथ मरना है तो मरते दम तक मैंने अपनी जिंदगी I live by my own rules, और मरते मरते मैंने किसी 6 जन को जीवन देकर मैं चला गया. चलिए मुझे ऊपर करके निकलो. ऐसा काम कीजिए जैसे यमराज जब आए वो भी आपको बोले कि तुम बैठो बैल पे, भैंस पे, मैं आपके साथ चल के आता हूं क्योंकि आपने जीवन दान दिया है, बड़ा काम किया है. तो किसी भी एंगल से देखे, इसमें कोई बुरी बात नहीं नजर आया. अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि आप समझते हो कि मैं कुछ गलत कहा, प्लीज हमें बताएं, क्योंकि आप लोगों से मैं भी सीखूं. सो अंगदान करना एक्चुअली हमारा धर्म है. The other question I get कि how do I know I'm an organ donor? क्या I can donate an organ? मेरे एक चश्मा है, मेरे आंखें ठीक नहीं है, इसलिए मेरे आंखों का कोई यूज नहीं है. So let me give you that perspective also. जब हम मंदिर में when we give पैसे डालते हैं ना हुंडी में, हम अपनी श्रद्धा से देते हैं. अब उस पैसों का क्या होता है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है. हमें विश्वास है कि कुछ भगवान के नेक काम से ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान को पैसे की जरूरत है नहीं, पर फिर भी हम देते हैं ना. तो अंगदान भी कोई डिफरेंट नहीं है. दान करना हमारा काम है. इसमें क्या यूजफुल है, व्हाट इज यूजफुल इन माय बॉडी, लेट द मेडिकल कम्युनिटी डिसाइड. लेट्स नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस टू से नो, बिकॉज देयर इज नन. Either you want to or you don't. There is no excuse. There is no reason why not. It's just कि I don't want to. Now, if you say I don't want to, आपके अपने कारण होंगे. Anyone should donate. Anyone. Either you're drinking too much or you've had cancer. If you've had cancer, you can still donate your eyes. The rest of the organs may not be viable. If you have cataract, and you're 98 years old, you can still donate them. If you are blind and you can still donate your corneas because your corneas are healthy.
If you are retinally blind, your corneas are healthy, you can still donate your eyes and still give sight to 6 people. तो आप इसकी चिंता ना करें. अगर आपको करना है ना, आप श्रद्धा के साथ कर लो. हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, वो संभाल लेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उनको पता. हमें जरूरत ही नहीं है इसको जानने की. पर हम इतना जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने मौत में किसी के काम आए, बस यही. Now the law in India is this, that your organs are not your right to donate. You cannot will your organs. You cannot do anything with your organ. It is not your right to donate legally, unlike in America. Now, this puts us in a very difficult situation, right? Then how does one become an organ donor? The only way to become an organ donor in this country, in India, is to tell your next of kin who have the legal right to decide. So if, for example, there is an NGO like me that comes to you and says, sign up, become an organ donor, I'll give you a card. It is useless in India. The law does not recognize that card as your will. The right resides in the next of kin, your children and your surviving spouse only, not even your extended family. No one except them have the right to decide. So even if you say, yeah, I want to donate my organ, and they decide no means no. And if you say no and they say yes, yes means yes. So if you want to donate your organs and make sure that you want to leave that legacy behind and survive and leave some people in a better shape than they were before you gave them the organs, then please talk to your family, which is the most important way. You've got to communicate with them and tell them that these are your desires and wishes and this is why I want to do it. Maybe you will inspire them to also donate their organs and talk to their children, because only they have the right. You understand? But you have children very far away sometimes, right? They're not near you. So it is important to tell your friends of what your wishes were so that they can communicate to your children and say, hey, listen, इन्होंने ये बात हमें बताई तो शायद आपको उनकी आखिरी इच्छा को पालन करें. It's an emotional decision. They have the legal right, but it's an emotional decision that you have to convince them with. हाँ, इसमें मेहनत है. प्यार में मेहनत है, इंसानियत में मेहनत है. और जहां पर wherever you say yes, उसमें मेहनत है, क्योंकि ना कहना तो आसान, क्योंकि उसमें मेहनत है नहीं. It's a conscious effort. And it is driven by love. How? Love for humanity at a very macro level. Or it's love for an individual, where in my case, I donated my kidney to my brother क्योंकि उससे मैं प्यार करता हूं. और डर भी था. और इस डर को मैंने कैसे दूर किया मुझे ही पता है. इसीलिए मैं इस मुकाम को शुरू किया हूं, ताकि मैं वो फ्लड लाइट बन के आऊं लोगों की जिंदगी में, ताकि वो एक प्यार भरा डिसीजन ले पाए. मैं कभी किसी को कहता नहीं हूं कि आपको ऑर्गन डोनेशन करना है. इतना कहता हूं कि इसको कंसिडर कीजिए और इसमें इतने इतने बेनिफिट्स हैं. जब मेरे पिताजी मरे, his organs were donated by us, but we never had that conversation with each other. पढ़े लिखे घर के हैं हम, पर ये कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं. और ये अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही प्रॉब्लम, ये कॉन्वर्सेशन होता नहीं. But we decided to donate. Why? As children, we are the ones suffering the loss of him. उनको तो मुक्ति मिल गई, वो गुड न्यूज का था ना. But we suffered the loss of him. The grieving that I did, that my mother did, that my brother did, was a very selfish emotion, क्योंकि वो हमको अफेक्ट कर रहा था. शोक जो है ना, grief, it's a very selfish emotion. जो मरे उसके बारे में नहीं. The outcome of that person's death has caused me grief, me. So we decided कि इस selfish grief को एक positive twist दिया जाए.
So we wanted to keep our father alive in any form possible, which is why we say we have the power to be life givers, because it is our decision to do it. So we kept our father alive by donating his eyes. I had no information that I could donate his skin. Just जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, उस समय मुझे पता तक नहीं था. और हम पढ़े लिखे हैं भाई, मास्टर्स डिग्री किए हैं, पर इतना नहीं पता था कि आइज के अलावा भी इतने कुछ दे सकता. अगर पता होता तो हम सब कुछ दे देते. जस्ट टू कीप माय फादर अलाइव. इसलिए उनका जो फोटो है ना हमारे घर में है ही नहीं, क्योंकि फोटो किसका रखते हैं, माला किस पे चढ़ाते हैं, जो मरा हुआ. पर हमारा विश्वास है, द ट्रूथ फॉर मी इज ही इज स्टिल अलाइव. तो फोटो की जरूरत नहीं ना माला की. ये जो सेल्फिश शोक जो है उसको हम साकार किए हैं, पर भला किसी का हुआ है. और उनके आंखों से कुछ लोग इस दुनिया को अब भी देख रहे हैं. ये हमारा विश्वास है, यही सच है हमारे लिए. And to address this thing about truth being negotiable, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. If I come and tell you this is the truth, आप मानने को तैयार हो? You will ask me 10 questions, counter it, until I'm able to convince you. The moment I convince you, then you start believing it's the truth. But if I am not able to convince you, and you don't believe it, it's not the truth. I'm negotiating with you. But I have found in my life the one truth that always survives, it is always non-negotiable, is my own jazbat, my own feelings. Today, right now, I'm feeling this. I know that is the truth. Mera sach wahi hai. But if I try and tell you I'm really sad today, but I'm smiling, you won't believe it. अरे यार तुम हंस रहे हो, कैसे गम में हो? I have to negotiate with you to believe my truth. But internally, I know my truth. What I feel is my truth. Everything else is negotiable. Just think about that. I know it sounds funny, but put other examples in the same place and you'll continue to see that it proves itself correct over and over again. Now let's talk about organ donation. What are the things you can donate? It shouldn't matter. That's what I'm trying to tell you. It doesn't matter what you can donate. Just donate. Let somebody else figure out कि आपका क्या लेना है, क्या नहीं लेना है. And it's done very respectfully, surgically done. ऐसा नहीं कि काट कूट के अपने परिवार को एक थैली में, garbage bag में आपका जो भी remaining है उनको दे देते हैं. ऐसा नहीं है. It is done very respectfully, surgically. पता भी नहीं चलता कि उसमें कुछ हुआ है. So उससे ना डरे. And you have to ensure कि वो organs are retrieved within 6 hours of death. Otherwise वो unviable हो जाएंगे. तो इसलिए जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, हमने आई बैंक को पहले फोन किया, फिर पुजारी को फोन किया, क्योंकि उनको आना है, ले जाना है, और फिर बाकी हम संस्कार कर सकते हैं. पर 6 घंटे के अंदर होना चाहिए. So I will leave the rest of my talk. जितना भी टाइम बचा है, बचा भी नहीं है, पता नहीं. I don't know if I have time left. आपके busy schedule में. But if you have, how do we know the parts are not misused? I'm glad all of these questions are coming. I'll go back to the same analogy of hundi में आप मंदिर में पैसे देते हो. How do you know it's not being misused? Do you care? The objective of your donation is to save a life. You, another human being, your organs should come into this person. अब किस रास्ते से आता है, किस टेढ़े मेढ़े रास्ते, as long as it's reaching this person and it's saving a life, उससे आप मतलब रखो. वो बीच का रास्ता है, उससे आप मतलब ना रखें. It makes no sense. Because अगर बीच में कुछ गलत हो रहा है, वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा. आपका जो फोकस है, saving a life. So all of these questions that you're asking me are also used as reasons to say no. नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं देना है, क्योंकि ये साले पैसे बनाएंगे, और नहीं. ये जो false sense of सिद्धांत,
और इससे क्या होता है आपके सिद्धांतों से? किसी मासूम की जान जाएगी जहां जानी नहीं चाहिए। सो फोकस रखें। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है ना कहने के लिए। जिस दिन आपने हां कर दी, कुछ भी हो जाए। जब मुझे किडनी देने की बारी आई और इसी हमारे देश का जो कानून है, आई हैड टू टेक द परमिशन ऑफ माय वाइफ एंड माय वाइफ सेड नो। अब बहुत लोग इस समय पीछे हट जाते हैं देने से, अपना प्यार निभाने से। मैंने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया अपना किडनी देके मेरे भाई को, मैंने बस अपना प्यार निभाया है। जब लोग कहते हैं यू मेड सच अ बिग सैक्रिफाइस, नहीं, मेरे दिमाग में ये कभी आया नहीं कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। प्यार निभाया हूं और हर हालात में निभाया हूं, क्योंकि प्यार अटल था। डर सामने नहीं आया, उसको हमने इंफॉर्मेशन के साथ उसको हरा दिया। मेरी बीवी ने इसलिए किया क्योंकि वो डर से किया। हम उसको तलाक देने तक आ गए थे। बात वहां तक पहुंची कि आई वाज गोइंग टू डिवोर्स माय वाइफ, क्योंकि the only reason she said no was because the law gives her the right to say it because she's my wife. जब वाइफ ही नहीं रहेगी, ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी वाली चीज, तो मुझे वो सिग्नेचर की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर शुक्र है कि उस तक नहीं आने दिया हमको हालात ने, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे 14 और 16 साल के, उन्होंने अपनी मां को समझाया और उनके समझाने से मेरी बीवी को अकल आई कि ये क्यों अच्छी चीज है, इंफॉर्मेशन। बेटी ने पूछा, मां अगर मेरे भाई को मुझे देना है उसको बचाने के लिए, क्या आप मना करते मेरे से? बस गूगली फेंकी, बाप क्लीन बोल्ड, और फिर उन्होंने साइन किया, पूरा मेरा साथ दिया। अब उस बात को 7 बरस हो गए। एक किडनी के साथ हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। कोई मेडिकेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप पहले थे अभी भी ऐसे ही हो गए, क्योंकि नेचर ने हमें एक स्पेयर वाला दिया है और उस स्पेयर हमारे अपनों के काम आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूं, मेरे भाई के साथ भी और मेरे भी। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। 51 उम्र के, अभी मैं 53 का हूं, पर 51 2019 में अगर ये आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, आजकल ओलंपिक गोल्ड का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बस एक छोटा सा योगदान हमने भी अपना देश को किया है। देखिए, ये हमारा इंडिया वाला टी शर्ट था जो हमने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पहनी थी, और हम भी हमारे देश के लिए गोल्ड जीत के आए हैं। एथलेटिक्स में आई एम अ बेटर एथलीट एट 51 देन आई वाज एट 31 और 21, एक किडनी के साथ। बस यही दिखाने जा रहा हूं कि इससे आप डरे ना। मूवीज में ड्रामा क्रिएट करने के लिए बहुत ऐसे सिचुएशन लाते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, हमने किडनी दी है इसलिए मैं स्पोर्ट्स नहीं कर सकता हूं। गलत। आप उसको बिलीव ना करें, हम जैसों की बिलीव करें, जो हम भुगत रहे हैं। हम भुक्तभोगी हैं भाई। मैं कह रहा हूं ना, 100 मीटर्स का दौड़ 51 की उम्र में 13.6 सेकेंड्स में किया मैंने, और ये आसान बात नहीं है। 5 किलोमीटर दौड़ना सबसे आसान है, 100 मीटर स्प्रिंट आसान नहीं है। फिजिकली इज वेरी टैक्सिंग, बट आई डिड इट जस्ट टू शो पीपल, यार नहीं है, देखो, डरो मत। कैन आई लीव इट ओपन फॉर क्वेश्चंस, बिकॉज आधा घंटा शायद ऑलमोस्ट हो भी गया। थैंक यू श्रीवत्सा जी, एक्सीलेंट टॉक, रियली थॉट प्रोवोकिंग। और जो सबसे बढ़िया जो आपका जो एक मुझे जो लगा सबसे बढ़िया आइडिया, वो ये था कि हम एक अपनी लिगेसी को जीना चाहते हैं। हमारा लिगेसी जैसे जो फाइनेंशियल लिगेसी होता है या रियल एस्टेट होता है, वी ऑलवेज वांट कि हमारा लिगेसी जो है अगले 5 किस्तों तक या 5 वो किस्तों तक चलता रहे और मेरे सब लोग याद करें कि हाँ भाई मेरा ये था। लेकिन जब हमारा बॉडी का आता है तो हम बिल्कुल उल्टा स्टैंड ले लेते हैं। अरे ये Correct. कितना बढ़िया थॉट है कि मैं मरा नहीं हूं और मेरी 6 आंखें मतलब इस वर्ल्ड में जी रही है। जो आपका ये थॉट था ना, इट्स रियली रियली ग्रेट थॉट। कि मतलब ये तो बहुत बड़ी लिगेसी हो गई ना, लिगेसी हो गई मेरी है। दैट मींस कि आई एम कंटिन्यूइंग माय लिगेसी, बोथ द लिगेसी। एक्सीलेंट थॉट। कोठारी जी, एक और बात यह है कि जी, some people say कि why should I give my organs to some stranger? वो तो मैं कोई कहता हूं
Right. उस स्ट्रेंजर को आप शुक्रिया अदा करें, हाँ, क्योंकि वो स्ट्रेंजर आपको मौका दे रहा है फिर से जीने की उसमें। right. नहीं, दिस ग्रेट अगर थॉट, वो नहीं ग्रेट होता थॉट, तो आपको चांस ही नहीं। ग्रेट थॉट कि मेरी बॉडी जी रही है, मतलब इसका मतलब कि मैं अभी भी जी रहा हूँ। इट्स अ ग्रेट थॉट, रियली ग्रेट। तो मेंबर्स, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। वी हैव maybe 10-15 minutes. Yes, Any sir. question Can you, on this? yeah. Can you please tell us how to make it possible in 6 hours? Whom to contact? Details like that. Correct. So, well, when you pass away, there's no way you can contact anybody. So you need to have this conversation with your family, which is why I say family में ये बात करें, and they should contact the iBank first. There's iBanks in every major city. अगर वो भी नहीं access है, just talk to your doctor. First thing आप doctor को बोले. The first call you make, doctor, ये कुछ हुआ है, death certificate बनने से पहले आप बोलो, they want to be an organ donor, so what can I do? And they will help. They will help get this done. But पूछना आपका काम है, आपके family का काम है. Yeah, okay, thank you. And do I come to know to whom I have donated? I mean, do my next of kin come to know? It is better not to, because it could create a lot of emotional upheavals for both sides. तो वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, बस नेकी करिए जी. Again, that's knowing is again a part of ego. At least मरते मरते आप ego को छोड़ के जाएं. Yeah, thank you so much. Very, very nice. Just ask for your contact details and connect. Is that possible? I have given that message. Yeah, that I Yes, will sir. collect. And Yeah. That we will Shekhar ji give and it to you. Kothari ji हाँ. know. Yeah, we will give it to you. We will give it to you. Yeah, Thank yeah, we'll you. share, we'll share. Thank you. नहीं, बट जो सबसे बड़ा जो डिलेमा है ना श्रीवत्सा जी की, मतलब मेरी फैमिली सोचती है कि यार ये बॉडी को पूरा जलाना चाहिए, ये बॉडी को खंडित ना करूं मैं। और खंडित अगर बॉडी हो गई, काफी धर्म में ही माना जाता है कि अगर एक बॉडी खंडित हो गई, इसका हाथ कटा हुआ या वो है, तो इट इज नॉट अ पूर्ण बॉडी, एंड दैट इज द बिलीफ दे हैव कि पूरा बॉडी को जलाना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा बिलीफ है, इसमें आपका क्या स्टैंड है? इसको क्वेश्चन करें ना कि क्या होने वाला है, कहाँ कौन से स्क्रिप्चर्स में लिखा है, आप बताइए। अरे वो पूजा तक नहीं करने देते कितनी बार, अगर मेरी अंगुली कटी हुई है तो। इसलिए भगवान सर I don't- ये अंधविश्वास है, ये इसमें धर्म या लॉजिक का कोई योगदान नहीं है। बिकॉज अगर धर्म का एक पालन एक किताब से होता है और सब वहीं से एमिनेट होता है। अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ है, लिखा जो लिखा है, पर इसको इंटरप्रेट करने वाले अलग अलग तरीके से होते हैं। हर जज अलग अलग इंटरप्रिटेशन देता है। या आप इंटरप्रिटेशन को माने या अपनी दिल की सुने, बिकॉज इंटरप्रिटेशन आपको 100 मिलेंगे। आप किसको बिलीव करोगे वो अपने इच्छा से प्रकट होता है। वी वॉन्ट टू बिलीव वॉट वी वॉन्ट टू बिलीव। You have 30 views. How come you pick this over that? Sometimes the mind rationalizes what the heart wants. In this case, your heart needs to be the leader, not your mind. Because you know for a fact that if your heart says, I want to give my organ to somebody and उनका भला हो जाए और वो ठीक से वो empathy हो उनकी तरफ, no Shakti in the world, no Shakti in the world can deny that. So there's a question from Mr. Padmanabhan कि डोनेशन के बाद में बॉडी को कैसे वापस दिया जाता है? आप आपने बोला था अभी, it is given the same way as you give it. There's just surgical cuts on it. और वैसे भी बॉडी ढका हुआ है, ऐसा नहीं कि नंगा है वहां पे कि लोग देख रहे हैं। तो उसी ढका हुआ स्थिति में ही मिलेगा आपको। अभी हाथी को क्यों पूछते हैं जी? आप कहिए, हाथी को क्यों पूछते हैं हम? वो भी एक जानवर ही है। क्योंकि हम मानते हैं कि हाथी का सर ही गणेश पे आया था ना, और अब हाथी को गणेश मानने लगे। इसका मतलब है हाथी डोनर था और गणेश जी रेसिपिएंट थे। तो अगर आपने आपका अंग डोनेट कर दिया किसी को, तो आपको भी पूजना ही चाहिए। एटलीस्ट जिनको आप डोनेट करें, आप उन्हीं के भगवान बन गए और मानवता का 100% भगवान हो आप। भगवान क्या चीज है? एक रेवरेंस है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये और बता जिसको दीजिए हम कि भगवान जैसे माने वो भगवान हो गए, विश्वास। एक क्वेश्चन का जवाब बताइए कि अगर मान लो मैंने कोई कंसेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब मुझे पता नहीं था इस ऑर्गन अवेयरनेस का क्या होता है, और आई हैव नॉट गिवन, एंड आफ्टर माय डेथ सपोज द फैमिली वांट टू गिव, इज इट ओके? It is their right, they can do it. जैसे दिस इज हमारे, देयर। it happened in my case ना, I didn't have the consent of my father, but the law of India gives me the right to decide. I'm decided. Ji, I have got a That's question. why I talk to younger people a lot. Anil sir, I have got a question here. Like Ji. once the body donation is done and the process is completed, they take away the whole body, and do they return the balance parts which were is unused to us back, or they keep it for themselves? What is that? No, They do the they funeral return. that portion. They return whatever is unused. However, there are lots of people who donate their body to science as well. Okay. In that case, the body is given to a medical college only, not any hospital. You can't just say, okay, यहाँ मेरे बाजू में अस्पताल है, हम उनको दे देंगे. नहीं, वो लेंगे भी नहीं. It is only given to a medical college facility. Okay. So that students can learn with that. Okay. Okay. But otherwise, it's returned with due respect, just like you had given it. It's very pristine. In fact, when my father's eyes were taken, मुझे पता भी नहीं चला कि वो ले गए. It was so clean. Okay. And there was a within question 50. there was a question कि how these eyes can be used for 3%? So the only transplant of the eye that can be done is the corneal transplant. So there are two kinds of blindness. One is a corneal blindness and the other one is a retinal blindness. So with an eye transplant, only corneal blindness can be rectified. So what they do is they take the cornea of the eye, and the eye का जो cornea है, एक आँख का 3 layer होते हैं उसमें. So they give 1 layer to each person. At least एक आँख उनकी तो जलने लगे. और एक आंख से दुनिया देख सकते हैं वही जैसे 2 आंख से. अब मुझे पता है क्योंकि मेरे बेटे का एक ही आंख है अभी, और वो गाड़ी चलाता है, सब कुछ करता है, उसके लिए वो नॉर्मल है. So giving even 1 eye to somebody is far greater than giving 2, and this way you can spread the joy, spread the benefit. So 6 can be used with your 2 eyes. Correct. 6% can get the benefit. Very good. I mean, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अभी science has given you the tools. Now it's up to you to use your heart. So friends, any more questions? Because Yes, sir. Yeah, Bahadur. I have a question. Yeah. Yeah. I just wanted to ask, sir, I joined a little late. So, if person is alive, I mean, he wanted to give his organ to, somebody stranger. So is there any, organization who, conducts such kind of things, or any hospital, where to contact? So now like I said, there are 2 ways to give your organs. One, you can do it while you're alive, and one is after death. Now, in both cases, if you want to give your organ to a family member or a friend who needs your kidney or liver, you can do that. But if you want to give your kidney or liver while you're alive to a stranger, Okay. it's called altruistic donation. So that will be given, but you cannot decide who it's given to. It will go to the first person on the waiting list. Okay. So this way, there is a possibility of trading and horse trading and trafficking becomes minimized. I mean, for this, we have to contact to whom? I mean, hospital or where? I mean, is there any? There are local government agencies called ROTOs and SOTOs, regional organ donation, and there's a national NOTO. So every state has its own, because health is a state subject. So every state has a ZCCK, which is the zonal and regional organ donation, transplant and organ donation organizations. So it's actually Google. You can find it on Google. Just search for that. I mean, is there any scams on this also? I mean, I have heard scams. Okay, let's talk about scams. See, scams. हर चीज में scam होता है. Yes. Right? Cars are stolen. Ammunitions are stolen. Yeah. अरे अस्पताल में scams होते हैं. Yes. So scams are maybe 10% or less. Yes. होते होंगे.
I mean, question So actually 90%. क्या होता है कि if I have donated, I am willing to donate. If suppose, I mean, you know, I have just visited. Why are you willing to donate? Why did you donate? What was your reason? No, I just this thought came into my mind that, you know, Prem. if people can, you know, live with a one organ, I mean, kidney or a liver. Yeah, So I mean, we should do that. I mean, there are so I many agree. people. You know, I yeah. agree, because there are 1 million people on dialysis today, and all of them need a kidney, and they all have families, and every family has a donor, but they're still not getting it from the family because there's not enough love or there's a lot of fear. But if you feel that, hey, listen, I am a healthy guy and I would love to do something good for somebody, I will give up one kidney so that somebody ka bhala ho jaye. That is your thought, right? Yes. Okay, so if you're thinking that, क्या फर्क पड़ता है वो किसको जाता है? Why do you need to choose कि उसको दूं, इसको दूं, इसको दूं? Yes. True. है कि नहीं? तो आपने बताना हुंडी में पैसा डाल दिया तो अब वो कैसे यूज हो रहा है वो जाने, मेरी नहीं, भावना तो अभी उसमें आ उसका गई, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा भी है ना, मेरी Just- भावना But आ if your गई कि friend- मेरी दान की भावना आ गई. हाँ, yeah, नहीं, But just if your question ये है friend is कि in need, yes sir, हाँ, I then you just can wanted give it to to your ask, friend. yeah, suppose कि मैंने तो donate कर दिया, but you know, if somebody is needy, but you know that they are just forcing them to pay money for that and all, you know, these things happens. I mean, So in your altruistic donation, it's all controlled by a central registry by the government. okay, then that's It is fine. not a private transaction. Okay. Friends, And yes, you I do think, have. Sorry, Yeah. Sekhar. go on, Ali. Thank you so much, sir. No, I'm just saying we- the scams, we unscrupulous have a doctors 2-3 and more hospitals minutes. do scams separately. And we will finish by this 11:30. Any more questions, one or two, you can ask, or we will finish this by 11:30. Yeah. Ashish ji had a question, right? Yeah. आशीष जी पूछिए, चैट में डाला क्या उन्होंने? You can ask. I think Ashish is nowhere, but I want to know what is the take on the Puranas on this thing, sir, on organ donations. Other than Ganpati's case, any other case of organ donation and its effects and impact, because so many things are covered by the Puranas in a big way, and they are supposed to be the, you know, ultimate, what's that called, the Vedic literature and all that stuff. I mean, which is supposed See, in all fairness, उस ज़माने में science had not advanced enough for this. Unless you say Ganpati's new head was an advanced concept, that means it existed at that time. Now, another story that you would hear is Dadich, Maharishi Dadich, जिन्होंने अपने सारे अंग, सारे हड्डियां देकर असुरा का नाश के लिए दिया था. Okay. These are acceptable things in our scriptures, in our folklore, or in our mythology, or whatever you call it. So if you look at the Bhagavad Gita or the Quran or the Bible or the Guru Granth Sahib, there is no writing in there ki mana hai. But what is said in there ki Jeevan Daan ek Mahadan hai. Okay. किसी के जीवन के प्रति हमारे जीवन को निछावर करना is the ultimate sacrifice or daan that you can do. But it's not said in so many words. Now, see, I did come across, I was a CEO of Kings 11 Punjab, right? So Irfan Pathan was part of my team. So because he's famous, I told him, यार मेरे लिए थोड़ा tweet कर दो, मैं ये organ donation campaign कर रहा हूँ, तो आप tweet कीजिए. तो वो कहते नहीं हमारे में मुसलमान में नहीं होता ये, हम मानते नहीं है इसको. सर क्या बात कर रहे हो यार, अगर यूसुफ को चाहिए आप दोगे नहीं क्या अपना किडनी? इसे अरे भाई के लिए कुछ भी दूंगा. फिर दोनों साइड के लिए क्या बात कर रहे हो? अगर मुसलमान में नहीं है तो आप किसी को देना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए. आप लेने को तैयार हो. So then I go one step ahead and say, listen, ये जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में हम गए थे, उसमें दो टीम थे, सऊदी अरेबिया का टीम और ईरान का टीम. शिया या सुन्नी के ठेकेदार देश हैं ये. अगर ये लोग ही टीम भेज रहे हैं लीगली, ये लोग ही मानते हैं कि ये ठीक है, तो आप लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि जिसको आप भगवान बना के विश्वास करते हो, जो भी मौलवी हैं जो आपको बोल रहे हैं ये चीज, उनकी बात मान रहे हो, पर जो ग्रंथ है वहां आप नजरअंदाज कर रहे हो. So it's a matter of what you want to believe to say yes or no.
That's why I keep coming back to belief, because everything is negotiable. Anil, you have a question in the chat. With that, we will close the question and answer, and followed by my vote of thanks. Sorry, what is the question? I missed that. Question is कि somebody. Question ये कि body donation to medical college, is the body used for study purpose or for anything else? In which case the organ may not be donated to a needy. Correct. It is used for the students to learn from your cadaver, to become better doctors. Thank you very much, sir. Thank you, Anil. I request Shekhar to. Yeah. Yes, Shekhar, you are giving vote of thanks? Yeah. I'm audible now? Yeah, you are audible. Yes. Friends, I must thank on behalf of you and Mr. Kothariji, Mr. Anil Srivatsa. In spite of being 12 o'clock in the midnight, he has taken pains to spread the awareness among our financial group members. This shows his compassion towards lives and people. I wish him success in reaching this awareness to 1 million people in much lesser time than what he has achieved in last 6 years, that is 126,000 people or so. I also thank Kothariji for readily agreeing to conduct this awareness program. Without him, we will not have had this program. Friends, I thank you all taking pains to attend this program in large numbers with family and children. We make a will when our soul is with us to take care of our assets after the soul leaves us. Similarly, we must develop the will of donating the organs to give lives after our soul departs. They say we live happily, but after listening to Mr. Anil, we can also die happily. Thank you. Mr. Ram, your final comment? Yeah, it was such a wonderful session. I was want of words to really express my feeling, because though we are into that commercial world all the time, this speech was so philosophical, and we also understood the meaning of life. Once again, thanks to Mr. Anil Srivatsa and our friend Mr. Shekhar, for giving this excellent program. Thank you all. Bye bye. होता जी आप बोलेंगे कुछ? होता जी आप हैं? Deepak Hota. Oh, he's not there. I'm there. Yeah. I want to hear from you also. देखिए ऐसा है, it was extremely, Anil ji, thank you from the bottom of my heart. It was extremely soulful, and it stirred certain things that we have buried in our hearts long back, and we have got so sucked into the material world that we don't look at these things. Extremely informative, eye-opener. All of us had doubts in our minds. We are all fence-sitters. I think it would help all of us. And I must thank Kothariji, because he has galvanized a group of people like us who are fairly passionate about things that we do. And I'm sure your talk will go a long way. And we will really, you'll have many more. Your numbers, as Shekharji was saying, will manyfold go up. If I've been a corporate guy, so I will look at it in terms of sales turnover. Yeah, if you don't mind. Scalability, yeah. I look so at the same way. Bottom of my heart. My wife joined me, and she was extremely happy. Thank you. Thank you. To conclude, Kotari sir, I just wanted to say one or two things. Number one was that my brother, who is a US citizen now, he stays in Dallas, Plano. He and his wife both have donated their bodies already. The cadaver donation, the options, they have filled up and given the forms and all that there. And I also wish to do it myself. Now I need to convince my children about it, because the concept of the children, the girls not being able to burn the funeral pyre and all consisting the Hindus and all that. So I also don't know. I've got two girls now. I don't know where they'll be a future abroad and all that. One of them is already abroad. So I also like to do this cadaver donation. I need to go and convince my kids also about it, how to go about it, and I also like to donate my body. So I was just questioning all these things, because ultimately it is our wish to do it. Because what is going to happen is, there's some called Vidyadan Sarvadanat Pradhanam कहते हैं. तो वैसे ही सबसे बड़ा शरीर धनी देना, सबसे देना, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए. Just like Karna used to donate everything, so we should also donate whatever best we can do from our side. Thank you so much, sir. Thank you so much. Incidentally, मैं Dallas में ही हूँ. Okay. Oh, I felt it because I saw the timing 11:30, 12. You said I was just speaking to my brother.
some time back. So we were just going to hit the bed right at that point of time. I felt that was the time because that's the time. I have about 6 talks in the next 4 days here, so I'm here for that. Okay, sir. Then thank you very much. Thanks a lot you, once again. And now Thank I you. would request Mr. Pidambaram to take the session on algo trading, or totally switch over from Saul world to the financial world. totally Good switch night. over. Because we all are. Good night, Anil. Thank you so much. Thank you. Good night. So Pidambaram ji, over to you. Now you can start your presentation. But Kothari ji, can you do algo trading with organs also? Hello. वो दोनों एक्सपर्ट को मिलाएंगे